Hi everyone. And today we are going to continue with the discussion. Last class we have already on election of the president, and today we are going to have the small recap about the things we have studied in the last class, and going to continue from the further section from us. Okay. So when we're talking about the president of the India, we must need to understood under section 52 of the Indian Constitution that there must be the president of the India. That is under Article 52 of the Indian Constitution. Okay. So there must be a president of the India. And under D3, we have understood the president is the authority or the senior authority of the or the senior commander of the army, navy, and the air force of the India. That means all the defense forces of the India that is being governed, that is being balanced by the president only. The president is the supreme authority of the India. So we have discussed about a bit about the executive, legislative, and judiciary. And under that, I have made you understood that legislative makes the law, executive implements the law, and judiciary derives the law. Judiciary takes or understands the authenticity of the law. What is right, what is wrong? Is the law for the public benefit? Is it hampering the public benefit? Whatever it is, this is the department of the judiciary to take care of the thing and to understand what is right or what is wrong. Okay. And what we have understood that without the signature of the president, none of the law that comes into existence. For example, if legislative is making any kind of the provision or legislative is making any kind of the law, that law is not going to be implemented until and unless that is getting the approval from the president of the India. Got it? So as the president approves all the bills, all the laws, all the provisions, and then it is being executed as per se, that is why the president is called the executive head of the state or executive head of the center as well as the executive head of the country itself. Got it? So coming to the next point, we have understood the election of the president. I have told you that the president is being elected by the members of the legislative assembly as well as the members of both the houses of the parliament. That means the Lok Sabha and the Rajya Sabha, the house of the people and the house of states. Lok Sabha, house of the people, house of the states, Rajya Sabha. So then these two kind of the houses, the members of these two houses, they elect the president of India. Got it? So coming to the next part, we have understood about the manner of the election of the president, under which we have understood the terms of the office of the president. I have told you the terms of the office of the president, that is basically and mainly that is 5 years term, like not only the president. If you go to the prime minister, if you go to the chief minister, everybody has been elected, the terms is only 5 years only. Okay. But before the completion of the term, the president can resign by himself if he is associated with certain kind of the terms and conditions. मान लीजिए he is doing, for example, he is physically getting unable to continue his office. He is getting sick. He is mentally becomes abnormal, or he lost his authenticity due to some illegal activity or any kind of thing which is making him incapable to continue as the designation of the president, then he can resign from his office via the letter of the resignation. वो अपने तरफ से resign दे सकते हैं from his or her designation of the president before the completion of his time period. Got it? And the second thing what it speaks, if the president is not resigning but he is involved in certain kind of the illegal activity which is not legal in nature or which is wrong in nature, in that case also the parliament, both the houses of the parliament, they can impeach, they can bring the bill of the impeachment under which they can impeach the president from his designation. ये बात भी हमने डिस्कस किया, मतलब अगर वो रहे हैं ड्यू टू सर्टेन काइंड ऑफ द कंडीशंस
एंड उन्होंने किसी भी तरह का गलत कदम उठाया है, इफ ही हैज डन एनी काइंड ऑफ द illegal activity, then if he is not resigning, तो the both the houses of the parliament के हाथ में ये क्षमता है, they can impeach the president from his resignation. Clear? Then we have understood about the eligibility of the re-election of the president, जहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि जहाँ पे president holds his position, he is eligible for to be re-elected. Re-elected, the president is eligible to be elected again, and the funda is very simple. You see, like for example, जैसे कि मैंने कल आप लोगों को समझाया था, the Narendra Modi ji has become the prime minister in 2014. Again, he became the prime minister in 2019, and again he became in 2024. After Pandit Jawaharlal Nehru, he became the second prime minister to continue his terms of the office more than 3 times. Got it? So, as we have understood that the person who is working for the welfare of the country, who is getting supported by the public, अगर कोई इंसान अच्छा काम, if the person is working for the benefit of the people, अगर वो पसंद करते हैं, then हाँ, that person can be elected again and again and again, because this is a democracy. यहाँ पे कोई भी इलेक्ट हो सकता है. अगर कोई इंसान सही काम नहीं कर रहा है तो उस सकता है. अगर किसी ने अच्छा काम कर रहा है, उसको एक बार क्या, 2 बार क्या, 3 बार क्या, बार बार भी इलेक्ट किया जा सकता है. So that means if I am the president of the India and I want to stand again for the same designation, for the same role, I have the capability to stand again for the same position. मैं फिर से वही सेम प्रेसिडेंशियल पोजीशन के लिए लड़ सकती हूँ. अगर मैं इलेक्ट हो जाती हूँ, इवन इफ आई हैड टेकन द ऑफिस फ्रॉम द लास्ट टर्म, मैं फिर से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अगर जीत जाती हूँ, then I can take over the office and I can continue my office. Got it? And we have understood the qualifications for the election of the president, जहाँ पे हम लोगों ने ये पढ़ा था under the qualifications, like the president must have the must be the citizen of the India. The president must above 35 years of the age. इनका उम्र 35 साल से. That person must be the citizen of the India. And thirdly, most important condition, that person must fulfill the conditions to be nominated as the member of the parliament. That means MP के लिए इलेक्ट होने के लिए जो जो क्राइटेरिया का जरूरत है, वो सारा क्राइटेरिया उनके पास रहना जरूरी है. बट इट इज नॉट मैंडेटरी कि दैट पर्सन शुड बी इलेक्टेड एज एन एमपी. ऐसा नहीं है कि हर कोई प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट एमपी होना ही जरूरी है. बट एमपी होने के लिए जो जो क्राइटेरिया है, वो सारा क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए. That is most necessary. And I have made you understood the election procedure of the Rajya Sabha. Like लोकसभा में जितने सारे मेंबर्स होते हैं, वो लोग कहाँ से आते हैं? हम लोगों ने भेजते हैं. We elect the members of the parliament, and the member of the Lok Sabha, they directly get elected by the people, okay, by to the center. बट वहां पे सेंटर को डायरेक्ट इलेक्शन होने के बाद राज्यसभा की बात करते हैं, हाउस ऑफ द स्टेट्स, दैट इज द अपर हाउस. तो वहां पे क्या हर कोई चला जाता है? नो, द आंसर इज नो. राज्यसभा को स्पेसिफिकली द पीपुल फ्रॉम द विधान सभा एंड द विधान परिषद, दैट मीन्स द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एज वेल एज द लोक सभा, the elected members from both these houses, they get elected to राज्य सभा. राज्य सभा को लोकसभा से और विधानसभा से मेंबर्स इलेक्ट होके ही जाते. एंड देयर आर सर्टेन सीट्स इन द राज्य सभा जहां पे आपको कोई भी इलेक्शन के थ्रू आना जरूरी नहीं होता है. इफ यू हैव द नेम एंड फेम, if you have expertise in certain kind of the area, for example in the music industry, you are a very old and famous singer, आपका बहुत नाम है, so in that case you can be nominated to the Rajya Sabha. मान लीजिए you are a very big archaeologist, आप देश के लिए बहुत सेवा की है, आप काम की है. मान लीजिए you are a very big social worker, तो in that case also you can be nominated to the Rajya Sabha. तो यहाँ पे जो नॉमिनेटेड मेंबर जाते हैं ना राज्यसभा को, जैसे कि मैंने बताया, निर्मल में बात कीजिए,
दैट पर्सन इज द अर्थ मंत्री है अभी हमारा, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। मतलब पहली बार भी वही थे और अभी भी वही वही कंटिन्यू कर। तो दैट पर्सन दिस टाइम, मतलब लास्ट टाइम उन्होंने इलेक्शन जीता था, बट दिस टाइम ही हैज नॉट स्टैंड फॉर एनी काइंड ऑफ द इलेक्शन। He is the member of the Rajya Sabha, and directly he has been she is the member of the Rajya Sabha, and she has been directly nominated to the Rajya Sabha. वो एक नॉमिनेटेड मेंबर है जिनको मिनिस्टर का पोजीशन मिला है। समझ रहे? So the member of the Rajya Sabha or the member of the Lok Sabha, anyone can stand for the presidential election. अगर कोई nominated member भी है who belongs to the Rajya Sabha, that person can also compete for the designation of the president. Clear? And then comes the conditions of the president's office, जहाँ पे हमने बोला समझ जहाँ पे हमने ये बात डिस्कस किया था that the conditions follows up when the president shall not be the member of the either house of the parliament. Agar, for example, there is a member of the Rajya Sabha who is fighting for the presidential election. There is the member of the Lok Sabha जो कि presidential candidate है, या फिर the person who is the member of the state legislative assembly, he can also or she can also fight for the presidential election. But agar that person wins the election, then that person need to leave his previous designation. अगर वो एमपी, एमएलए या मतलब कोई भी डेजिग्नेशन, फॉर एग्जांपल कोई मिनिस्ट्रियल पोजीशन किसी भी डेजिग्नेशन में पहले से थे, then he became the president, he has been elected as the president, then he is bound to leave his previous designation itself. उनको उनका जो प्रीवियस डेजिग्नेशन है वो छोड़ना बहुत मैंडेटरी है। सेकेंड कंडीशन क्या पढ़ा था? द प्रेसिडेंट शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट। वो कोई भी प्रॉफिटेबल ऑफिस होल्ड नहीं करेंगे। समझ में आ रहा? प्रॉफिटेबल ऑफिस मीन्स द आईएएस, आईपीएस, ओएएस, एनी काइंड ऑफ द गवर्नमेंट सर्विस। आप किसी भी तरह का गवर्नमेंट सर्विस को देख लीजिए। दैट पर्सन शुड नॉट कैरी एनी काइंड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिस or any kind of the official designation. Got it? Then the president shall be entitled without payment of the rent of the use of his official residence. प्रेसिडेंशियल का जो प्रेसिडेंशियल रेसिडेंट जो है ना, लाइक द राजभवन, द राष्ट्रपति भवन वी आर टॉकिंग अबाउट, द प्रेसिडेंशियल हाउस, वो जहाँ पे रहते हैं ना, ही इज नॉट बाउंड टू गिव द रेंट ऑफ द हाउस। उनको वहां पे वो घर में जो घर में वो रह रहे हैं, ही और सी नीड नॉट टू पे फॉर द रेंट ऑफ द हाउस। एंड घर का जितना सारा सर्विस है which is associated to the president, वो सारा सर्विस उनको मिलेगा एंड दैट इज मैंडेटरी इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल राष्ट्रपति भवन पे जो भी नौकर चाकर है, उनका जो जो गार्डियन का सुविधा है, उनका जो जो प्रोटेक्शन का प्रोटोकॉल है, तो द प्रेसिडेंट शुड गेट all kinds of the benefits for the duration of the 5 years. 5 साल जब तक वो ऑफिशियल, उनका जो ऑफिशियल रेसिडेंस है राष्ट्रपति भवन, 5 साल जितने दिन तक वो वहां पे रह रहे हैं, उनका खाना पीना रहने का सारा जो खर्चा है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। एंड उनको सारा का सारा बेनिफिट अंडर द प्रोटोकॉल सब कुछ मिलना बहुत जरूरी है। एंड दैट पर्सन इज एंटाइटल्ड टू एंजॉय all kind of the benefits, and in return that person is not liable to pay a single penny. प्रेसिडेंट को अपने रहने के लिए, खाने के लिए एक भी रुपया देने का कोई जरूरत नहीं है। ही और एंड द सिक्योरिटी के लिए, फॉर हर प्रोटेक्शन, जो पुलिस सिक्योरिटी होता है, आर्मी सिक्योरिटी उनके लिए होता है, उसके लिए क्या प्रेसिडेंट खुद ही पैसा खर्चा करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। Because that is the jet plus security is within given to the president, because that person is the asset of the country. वो हमारा किंग है। that person is the head authority of the executive. उनको ही नहीं सकता। so he or she is the asset of our country. हमारा कंट्री का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो। so उनका सुरक्षा करना हमारा जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, सबका ड्यूटी है। So they just do their duty to protect the president. Got it? And then we have understood the section article 60, जहाँ पे हमने oath of the president के बारे में डिस्कस किया था। एंड अभी हम impeachment
procedure of the impeachment of the president. Okay, this is very simple. समझ मतलब let's understand this step by step. पहला क्या बोलता है? When a president is to be impeached for violation of the constitution, the charge shall be preferred by the either house of the parliament. पहला point. Second, no such charge shall be preferred unless the proposal to prefer such charge is contained in a resolution which has been moved after at least 14 days notice in writing, signed by not less than one-fourth of the total number of the members of the House has been given their intention to move the resolution. And such resolution has been passed by the majority of not less than two-thirds of the total membership of the another house. When the charge has been so preferred by either house of the parliament, the other house shall investigate and charge and cause the charge to be investigated, and the president shall have the right to appear and to be represented at as such investigation. Okay, if as a result of the investigation, a resolution is passed by the majority of not less than two-thirds of the membership of the House, by which the charge was investigated or caused to be investigated, declaring that the charge preferred against the president has been, such resolution shall have the effect of removing the president from his office as from the date of the resolution so passed. Very simple thing. Impeachment of the president का प्रोसीजर क्या है मैं आपको समझाता हूँ. पहले क्या होता है देखिए, लेट्स अंडरस्टैंड इन वेरी सिंपल लैंग्वेज. दोनों हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा. मैंने ऑलरेडी बोल चुकी हूँ. मान लीजिए मतलब यहाँ पे प्रोविजन ये बोलता है अंडर द आर्टिकल 61 ये बोलता है ये मैंडेटरी नहीं है कि दोनों हाउस ही प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट का बात हो. एनी ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन रेज द टॉपिक ऑफ द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. मान लीजिए द लोकसभा फील्स दैट कि नहीं प्रेसिडेंट से कुछ प्रेसिडेंट जो भी है इज डूइंग सम काइंड ऑफ द अनऑथेंटिक एक्टिविटी. वो कुछ इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं एंड वो किसको दिख रहा है? लोकसभा को दिख रहा है. द हाउस ऑफ द पीपल दे आर सीइंग दिस. तो उन्होंने क्या करेंगे या फिर राज्यसभा द हाउस ऑफ द स्टेट कोई भी हाउस एनी ऑफ द हाउस कैन ब्रिंग द इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन द रिजोल्यूशन ऑफ द इम्पीचमेंट. ओके, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट के लिए जो रिजोल्यूशन पास होता है ना हमको ये समझना बहुत कि वो रिजोल्यूशन किसी भी हाउस ने रेज कर सकता है. इट माइट बी द लोकसभा, इट माइट बी द राज्यसभा, इट माइट बी द हाउस ऑफ द पीपल और इट माइट बी द हाउस ऑफ द स्टेट्स. ये मैंडेटरी नहीं है कि हाउस ऑफ द पीपल ही प्रेसिडेंट के अगेंस्ट इम्पीचमेंट का रिजोल्यूशन ला सकता है, या ये मैंडेटरी नहीं है कि हाउस ऑफ द स्टेट कैन ब्रिंग द रिजोल्यूशन अगेंस्ट द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट के अगेंस्ट जो रिजोल्यूशन है वो किसी भी हाउस किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ला सकता है एंड दैट इज जेन्युइन लाना. अगर प्रेसिडेंट ने कोई गलत काम किया है तो रिजोल्यूशन. ओके, तो दूसरा आपका जो रिजोल्यूशन आएगा वो किस फॉर्मेट रिटन फॉर्मेट पे आएगा. ऐसे नहीं कि आप जाएंगे और माइक पकड़ेंगे और बोलेंगे अरे यार ये प्रेसिडेंट ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है. नहीं, ऐसा नहीं चलता. राइट, तो प्रेसिडेंट को इम्पीच कर रहे हो मतलब यू आर impeaching the supreme body of the constitution. समझ रहे? That person is considered as the king of the executive, king of the Indian constitution. जब आप उनको अपना पोजीशन से हटाने का बात कर रहे हो ना आपके पास सफिशिएंट सबूत रहना कि उन्होंने क्या गलत काम किया है. What is the reason of his or her impeachment? उनका इम्पीचमेंट का रीजन क्या है ये चीज समझना बहुत जरूरी है एंड इस चीज का क्लैरिफिकेशन भी लाना बहुत जरूरी है. एंड इसीलिए इफ द इम्पीचमेंट में प्रपोजल आता है टू रिमूव द प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस, ये जो प्रपोजल आता है ना दैट शुड बी अपॉन ए रिटन फॉर्मेट. एंड सिर्फ रिटन फॉर्मेट पे रहना सफिशिएंट ही नहीं है. along with the written format, that proposal need to be associated to be signed by the two-third majority of the house who is bringing the proposal. For example, Lok Sabha is bringing the proposal of the impeachment. That should be come with the written resolution जिस resolution में लोक सभा का
2/3 मेंबर का साइन रहना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है? दैट मीन्स इफ दैट इज द हाउस ऑफ द पीपल, उन्होंने बोला कि प्रेसिडेंट कुछ गलत काम कर रहे हैं, तो उन्होंने प्रेसिडेंट के अगेंस्ट जो रिजोल्यूशन रेज करते हैं, जो रिजोल्यूशन लाते हैं, ये समझना जरूरी है कि जब वो रिजोल्यूशन लाया जाता है, उस रिजोल्यूशन पे उसी हाउस का 2/3 मेंबर का सिग्नेचर रहना बहुत जरूरी है। 2/3 मतलब अगर पूरा हाउस के जितना मेंबर है 3 भाग में बांटा जाए, तो उसका 2 भाग जितना होगा उतना मेंबर का अप्रूवल रहना बहुत जरूरी। ओके ओके, सो just 1 second coach. Yes, but we are studying, sorry, I've got a call. So when we are talking about the resolution of the impeachment that has been brought by any of the house, जिस हाउस में ये प्रपोजल ला रहा है उसी का 2/3 मेंबर का अप्रूवल रहना जरूरी है। 2/3 का मतलब क्या हुआ? मिनिमम अगर आप टोटल 100% पकड़ के चलते हैं, तो मान लीजिए 66% से ज्यादा होना जरूरी है, 67% मान के चलिए। There should be the approval and the signature of the minimum 67% of the members of that house in that particular resolution. ओके, हो गया। मान लीजिए इम्पीचमेंट का रिजोल्यूशन आ गया, उस हाउस का 2/3 मेंबर 67% मेंबर जो है उन्होंने अपना अप्रूवल दे दिया। अप्रूवल उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है द रिजोल्यूशन विल पास टू द अनदर हाउस। अगर राज्यसभा ने इम्पीचमेंट का रिजोल्यूशन लाया है, देन आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द 2/3 मेंबर ऑफ द राज्यसभा, द रिजोल्यूशन विल कम टू द लोकसभा। एंड इन द सेम वे, अगर लोकसभा ने या फिर द हाउस ऑफ द पीपल हैज रेज्ड द रिजोल्यूशन, देन लोकसभा में या फिर हाउस ऑफ द पीपल में वो रिजोल्यूशन पास होने के बाद दैट विल गो टू वेयर, टू द राज्यसभा। तो दिस वर्क्स वाइस वर्सा। अगर अपर हाउस ने क्रिएट किया तो वहां पे 2/3 मेंबर का अप्रूवल के बाद एंड द रिजोल्यूशन शुड बी रिटेन प्रॉपरली साइंड बाय द 2/3 of the members and then it passes to the lower house, the Lok Sabha. Okay, मान लीजिए the resolution is being signed in the Lok Sabha, has been raised by the Lok Sabha. तो लोक सभा मीन्स लोअर हाउस, लोअर हाउस में 2/3 मेंबर का अप्रूवल मिलने के बाद दैट रेजोल्यूशन विल अगेन पास टू द राज्यसभा, और राज्यसभा हो गए। तो यहाँ पे और एक कंसेप्ट है, क्या है? जस्ट गिव मी 1 सेकंड। यहाँ पे और एक कंसेप्ट है, क्या है? देखिए, देयर आर द 2 हाउसेस। अगर एक हाउस ने इम्पीचमेंट का प्रपोजल उठाता है, या फिर if one of the house is creating the impeachment proposal, then what is the responsibility of the another house over here? दूसरा हाउस का क्या responsibility है? The another house should accept should do the investigation upon that proposal. For example, as we have discussed, अगर लोकसभा में प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट का रिजोल्यूशन क्रिएट होता है and that is even passed by the 2/3 member of the that particular house, and when it comes to the notice of the Rajya Sabha, then Rajya Sabha means the house of the states. उनका ड्यूटी क्या है? To make the investigation upon that particular resolution. अभी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? राज्यसभा में होगा। सेम वे, अगर राज्यसभा में impeachment का proposal create and that has been approved